Hello guys, once again welcome back to everybody. Myself from Bujat. Today we are going to see the part third of the life process for class 10. Before that we will discuss from the left part that we discussed in our early video as we were discussing about the human digestive system. So we will discuss from that part only, then only we will see the topic that we are going to see today. So let's begin. As I told you in earlier video, we saw that in case of human digestive system, the overall process of digestive system or digestion is being done by the small intestine. And even I told you that the small intestine gets the secretion of two glands, which are pancreas and our liver. And I told you which are the enzymes secreted by those glands. And even the small intestine itself contains some glands in it, and the glands which are present in the small intestine digest some proteins, carbohydrate and starch, and even some acids into some different forms. So let's see. As I told you, the small intestine itself contains some acid, some glands which secrete some enzymes which digest the carbohydrate into glucose. Once again, I am telling you, please listen these topics. Carbohydrate into glucose, protein into amino acid, and fat into fatty acid, and finally the glycerol. And the small intestine, after getting digested of these all particles, the left food is passed to the large intestine, and before that the small intestine contains some villi-like structures which observes all the nutrition from there, and the left particle is sent to the large intestine. And look here, as I told you, a small intestine contains what? Villi. And even one more thing which we need to know about small intestine is that as we discussed the glycerol. What do you mean by glycerol? Actually, as I told you, whenever the respiration process takes place in human beings or any animals, a lot of energy are provided or produced. In that case, human beings or any animals which they don't need to use that energy only at the time of production, they store this energy, and this energy is known as what? Glycogen. What I told? Glycogen. And even the term which I had written here, glycerol. What do you mean by glycerol? Actually, the glycerol is somewhat about our waste material that we will discuss later, and even if that we will discuss in our excretion part 5. Hence, up to here, is this all clear to you all? Please comment me in the comment box section. Today we are going to see the respiration process in the part 3. Hence, we discussed the left particles or left matter of part 2. Now we are going to see part 3, respiration. Actually, I'm going to ask you a major information regarding to respiration and breathing. What do you mean by breathing and respiration? Actually, breathing is a type of external exercise which is taken out or carried by every organism, every living being, in order to get oxygen and give out the carbon dioxide. But respiration is a combination process of breathing as well as oxidation of food. Actually, how can we say respiration? It is combination of, how we can define it? Let's see. No need of writing anything. Just you have to write here what? Breathing plus oxidation of food content is known as respiration. Hence, from here we got one thing is that how we can differentiate respiration and breathing each other. So let's see how we can differentiate between breathing and respiration. As I told you, for respiration, energy is released, and even oxygen is very essential. But in some cases, there are exceptions where oxygen is not necessary. We will discuss both. Before that, once again I am telling you the definition of respiration is that
respiration is a combination of breathing and the oxidation of the food content. Hence, from here, let's see how we can differentiate between the breathing and respiration. Let's see. Before that, let me introduce another information of respiration. Respiration, how we can define once again. It is a process of generating energy from food. Is it clear? Now we are going to see what is the use of the energy which is provided or produced in the process of respiration. How is it essential, and what are the uses and what are the certain characteristics which are performed by using that energy or that made energy. So let's see. First of all, the energy which is made during the process of respiration are used for two purposes. First of all, growth. For the growth of the organism, energy is very, very essential. Hence, the energy which is produced during the respiration process is actually used for growth purpose. And second one is what? Development and repair. And even these two terms are somewhat connected but somewhat differentiated between each other. In order to understand these all, as I told you, growth. Growth means what? Growth can be in any part. It doesn't matter only growth of certain parts. But what about development? Development is actually those process which can be somewhat similar to the growth. But repair means the damaged part or the damaged organ need to be repaired. And now we are going to see how the energy is produced during the process of respiration. Before that, let me ask you one question, that where the respiration process actually takes place, and even how the respiration process takes place in our body. As you are seeing here, we had drawn here the respiratory system of human beings. So my question is that where actually the respiration takes place in or any organism? Actually, respiration process takes place in every cell of the body. You don't get confused that the respiration process takes place in our lungs. It is very, very wrong, because the process of lungs is somewhat different, that we will study later. As I told you, the process of respiration takes place where? Every cell. In every cell. And we will see how the respiration process takes place by a diagram. Suppose that this is a cell. As we know, every cell contains nucleus, and it is our cell. Let's see. Actually, when we eat food, suppose we are getting something from our external agent to our cell. We are eating what? We are eating food. We are eating food, or we are getting food from the anywhere, doesn't matter our source of food. And even we are taking oxygen. What actually takes place in our cells? Whenever we take food and oxygen, it goes to our cell, and this cell contain mitochondria, as we discussed already. And even this cell contain what? Cytoplasm. These all contents we already discussed in our class 9. So no need of worrying about that. So let's see. Actually, after this, there are the oxidation process which happens in the cell, and finally they expel two substances with energy content. Energy content with two substances. Which are those substances? Actually, the substances which are extracted out or which are produced out during the respiration are waste materials. But two materials, one only contained as waste material, whereas the another material produced in the respiration is contained as one of the most useful material for human being or for any animal. So let's see which are the produced content
in respiration. First one is carbon dioxide, CO2, and another one is H2O. H2O means water and CO2 means carbon dioxide, that we already knew. And let's see here. As I told you, we already knew that carbon dioxide is harmful for our health, harmful content. But water produced during the respiration is not harmful for our health, other else than it is useful for our health. Hence, the water which is produced during the respiration goes to the several parts of the human body or any animal and provide them the air energy content. And here we will study what is the use of water, how is it essential in our transport system, that we will study later in part 4. So let's see how we are going to classify respiration, how many types of respiration are there. Actually, as I told you, there is a differentiation between breathing and respiration. We already saw it. Now we are going to see about the different types of respiration. So let's see which are the different types of respiration. Is it clear? This much content, is it clear to you? Please comment me in the comment box section. Actually, there are only two major types of respiration. One name is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Now we are going to discuss that only. Respiration is classified into two types. First one anaerobic, second one anaerobic. How we can write aerobic respiration and anaerobic respiration? Aerobic respiration. Anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Actually, see, it is a word which is derived from a Latin word which means that aerobic means what? Presence of oxygen. And the term anaerobic means what? In absence of oxygen. Hence, from its name only, we got that the different types of respiration are aerobic respiration and anaerobic respiration. Now we will discuss in detail what do you mean by aerobic respiration and anaerobic respiration and how these processes are taking place in certain animals or organisms. So let's see. As I told you, we already knew that the the food content that we eat is known as what? Cellulose. The food content that we take is known as cellulose. We already knew the formula of cellulose. Is it all right? What is the formula of cellulose? C6H12O6. Actually, there is a major confusion between the formula of cellulose, sugar, and our another name, which one? Glucose. Actually, you have to remain only one thing over there, is that the glucose, not cellulose, glucose is what? C6H12 and O6. Cellulose means what? We already studied. In plant cell, there contains one extra layer of what? Cellulose. Cellulose means what? It is organic material present in the plant cell. In the outer part of what? Plasma membrane. Hence, as I told you, cellulose, it is glucose. Glucose means what? There is a major confusion between glucose and sugar. C6H12O6 means what? Glucose. What about sugar? We already know C12H22O11. This means what? Sugar. We have to remind over only one thing, that glucose. Otherwise, you will get confusion once again. Hence, no need of writing here another term. Actually, every organism, their first food content is this glucose only. Then they break this glucose into another term which is known as pyruvate. They break this glucose into pyruvate. Pyruvate means what? Glucose contains carbon 6 atom, whereas the pyruvate contains carbon 3 atom. We will discuss that. What do you mean by
What? Is it all right? Once again, I'm writing bit. There you might not be getting clarity. Is it all right? Pure bit. Now, as I told you, the glucose contains 6 atoms of what? Carbon. Whereas this pyruvate contains only 3 atoms of, yes, this pyruvate contains only 3 atoms of carbon. Hence, in this process, the process which involves the breaking of glucose into pyruvate is known as what? Is known as glycolysis. What? Glycolysis. The process which involves the breaking of glucose into pyruvate is known as glycolysis. And where this process of glycolysis takes place? In the cytoplasm. In the cytoplasm. Don't get confused that this glycolysis process takes place in mitochondria. Actually, the first process of breaking, it doesn't matter we are human beings, plants, or any other organisms. The first process is that in both, even it can be aerobic or it can be anaerobic. I'm just telling you, the first process is that the breaking process of glucose into pyruvate. And the name of that process is glycolysis. And the glycolysis takes place where? In the cytoplasm. And now look here. Look here. As I told you, the pyruvate contains 3 atoms of carbon. So let's see the chemical formula of this pyruvate. Actually, pyruvate is also known as pyruvic acid. Hence, we are writing here just pyruvate. Don't get confused. What do you mean by pyruvate? As the name suggests that it is a type of acid. Acid gives what? OH ion. We already knew that. If you don't know, we will discuss in our chemistry part. So no need of writing this. We will discuss in acid, base and salt. No problem. As I told you, so let's see what is the chemical formula of pyruvate. So let's see. CH3 single dash C double bond O OOH. Is it clear? Do you know what do you mean by these all rings or branches that we are providing here? This you will study in the carbon compound. There you will study what do you mean by these all the signs that we are putting here. What do you mean by double sign? Don't take it as equal to. No, it is not equal to. We will study later in our chemistry part. As I told you, glycolysis is a process which involves the breaking down of this glucose into pyruvate, which takes place in cytoplasm. And after this, we will classify as aerobic and anaerobic. Then only we will discuss the process. Hence, first of all, we are going to see the aerobic respiration. Which type of respiration? Aerobic respiration. So let's start. As we will don't waste too much time. Aerobic respiration. Aerobic or aerobic, no problem. How you can say no problem. तो यहाँ पर से भाई लोग क्या पता चला कि aerobic respiration क्या होता है. अब देखो मैंने पहले बता दिया aerobic means what? Presence of oxygen. अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा. मैं प्रोसेस को अब ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा, बस लिखते जाऊंगा. ग्लूकोज, ग्लूकोज change into what? Pyruvate. Then process, no need of writing or writing, no problem. Glycolysis. Where happened? Cytoplasm. As we are discussing here what? Which type of respiration? We are discussing here aerobic respiration. Hence, after this, it is a basic function which happens in both aerobic and anaerobic. Now look here. There one process happens which is Krebs cycle. No need of worrying about that. Krebs cycle is a very, very simple cycle which involves a type of respiration in the presence of oxygen. Hence, here we are getting what? Oxygen. And here, after getting oxygen, the process of here begins what? Oxidation. And finally, oxidation happens where? It happens in mitochondria. Mitochondria.
भाई लोग यहाँ पर से कंफ्यूज मत होना कि मैं पहले बता दूं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि सभी में होता है, ऑर्बिक हो या अनऑर्बिक। लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन क्रैश साइकिल। अब देखो भाई यहाँ से ये सभी क्या था हमारा एलएचएस, समझो इसको एलएचएस समझो, लेकिन यहाँ से एक्चुअली रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसका देखो एनर्जी कंटेंट क्या क्या निकलता है, जो पहले मैंने बता दिया 6CO2। अगर इसे आप इतना समझिए तो बस इसके इरेज कर दीजिए, मैं आपको अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, जो कि 38 एटीपी के फॉर्म होता है। अब भाई लोग यहाँ पर से 38 एटीपी नहीं समझ में आ रहा, यू माइट नॉट बी गेटिंग अबाउट एनी ट्रू और क्लू अबाउट द एटीपी, सो लेट्स बिगिन दैट ओनली। तो यहाँ पर से अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस मैंने यहाँ पे 6CO2 और 6H2O को अभी इन्वॉल्व नहीं किया, जो कि बैलेंस करने के लिए आप लोग पहले बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट डू मीन बाय एटीपी, देन ओनली वी विल डिस्कस अबाउट anaerobic respiration. Actually, whenever the energy is produced, it is produced in two forms. There you will study about ATP and ADP. ATP full form androgen triphosphate. What about ADP? Androgen diphosphate. Both involves what? Phosphate. Phosphate. ATP means what? ATP क्या होता है? ATP means androgen triphosphate. वहां पर क्या है? Tri means 3. And ADP means what? Androgen di. Di means 2. Phosphate. Now look here. ATP is a major currency of respiration. और इसे क्या बोल सकते हैं कि मेजर कंटेंट ऑफ एनर्जी, यार एडीपी इज ए लोअर कंटेंट ऑफ एनर्जी। अब देखो जैसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो वहां पे एक्चुअली एनर्जी जो निकलता है ना वो एडीपी के फॉर्म में रहता है। अब फाइनली ये एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलकर हमारा एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सो लेट्स सी हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी मेक्स द एटीपी। एक्चुअली जैसे मैंने बताया एडीपी कहां पे हुआ? आफ्टर जस्ट रेस्पिरेशन, या जस्ट आर मैं लिख रहा हूं यहां पर से, प्लस पी। पी मीन्स व्हाट? फॉस्फेट। व्हाट वी गेट? एटीपी। एटीपी इज लार्जर कंटेंट ऑफ मेजर कंटेंट ऑफ एनर्जी। अब देखो भाई लोग कि यहां पर से क्या है, जो यहां पर से जो एटीपी कंटेंट आता है वो उसका 38 क्या होता है? अब देखो ये 38 एक्चुअली होता क्या? व्हाई वी राइट देयर द टर्म 38? व्हाट डू मीन बाय द टर्म 38? एक्चुअली देखो कि क्या होता है कि जो 38 लिखने का मेजर कंसर्न ये होता है कि वहां पे हमें ये बताना होता है कि इतना ज्यादा एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है। 38 एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, कुछ भी समझो, लेकिन समझने के लिए ये बोलो कि 38 एटम के कंटेंट के बराबर यहाँ पर से एनर्जी फॉर्म हो रहा है। और साथ ही साथ देखो कि ये जो प्रोसेस है इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। व्हेनेवर आफ्टर रेस्पिरेशन स्टोरेज क्या हो गया? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गया। लेकिन जब यूज होता है तो फाइनली ये एटीपी ब्रोक होकर क्या हो जाता है? यही दोनों का फॉर्मेशन करता है, एडीपी एंड फॉस्फेट का। अब देखो यहां पर से क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में रिवर्स साइकिल में एटीपी से फाइनली ये बन जाता है। इसे रिवर्स साइकिल यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हियर वन साइन यू हैव टू पुट, देन यू हैव टू पुट लाइक दिस। ये तो मैंने पहले पार्ट में क्लियर कर दिया था केमिस्ट्री का कि दिस साइन मीन्स व्हाट, मीन्स यहाँ पर से एटीपी से ये भी बन सकता है और फाइनली ये डिकम्पोज होकर ये बन सकता है। तो ये साइन आपको क्लियर रहना चाहिए, ये साइन मतलब होता क्या है, ठीक है? ये साइन आपको क्लियर रहना चाहिए। आप जब क्लास 10 में आ गए तो आपको क्लियर रहना चाहिए कंटेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ दिस एटीपी इनटू एडीपी एंड एटीपी इनटू एडीपी। यहां पर से जो एनर्जी कंटेंट निकलता है वो होता है इक्विवेलेंट कितना होता है? 30.5 किलो जूल मोल। भाई लोग क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं 30.5 किलो जूल मोल, 30.5 किलो जूल मोल। इतना एनर्जी जो रिलीज होता है इतने कंटेंट के बराबर होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर से हम लोग को एटीपी के चलते इतना क्लियर करना पड़ा कि एटीपी एक्चुअली होता क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, मैंने पहले बता दिया, नो नीड ऑफ राइटिंग इट, यू विल लर्न बेटर बाय इट्स नेम ओनली। लेट्स सी, एज आई टोल्ड यू, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। एटीपी क्लियर हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration or aerobic respiration, anaerobic respiration, sorry. Let's see here. As I told you, the name suggests that this type of respiration happens in the absence of oxygen. So यहाँ पर से भाई लोग बस इतना याद रखो कि जो सेम प्रोसेस है हमारा जी, अब ज्यादा हम लोग नहीं लिख रहा है, जी ग्लाइकोलाइसिस GLY,
what happened, where happened, cytoplasm, C/TO, finally what become, pyruvate. And look here, as I told you, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहता था प्रेजेंट तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था या ऑक्सीजन क्रैप साइकिल की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता था। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो देखो वहां पे क्या बन जाता है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे दो चीज का फॉर्मेशन होता है। देखो क्या क्या होता है, देखो मान के चलो कि ये हमारा कहां हो रहा है, जो देखो ये इसका बेस्ट एग्जांपल समझो ना, कि जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हमारा ईस्ट, बेस्ट एग्जांपल ईस्ट है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोब which makes their food or which obtain their energy by the process of fermentation। तो यहाँ पर से क्या हम लोग देखो ये ह्यूमन में भी होता है, वो कब होता है एक्सेप्शन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर से क्या हुआ कि हमारा जो एनर्जी कंटेंट जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, विच हैपेंस ओनली इन यीस्ट। तो यहाँ पर से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन AbO2, AbO2 मतलब क्लियर है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर से जो प्रोसेस के साथ एनर्जी कंटेंट जो रिलीज होता है, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पर से क्या क्या निकलता है, वहां पे क्या निकला था हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP। लेकिन यहाँ पर से जो हमारा रिजल्टेंट तौर पर निकलता है उसका दो होता है, एक तो हमारा इथेनॉल निकलता है। अब इथेनॉल के बारे में आप कहाँ डिटेल से पढ़ेगा, तो आपको मैं कार्बन एंड कंपाउंड में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ जो हमारा जो वीडियो आएगा उससे देखना ना भूलिएगा। सो लेट्स सी which are the products that we get as a resultant after this anaerobic respiration। यहाँ पर क्या निकलता है, एथेनॉल। इन केस ऑफ ईस्ट में क्या निकला, एथेनॉल। अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है ये मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली देखो एथेनॉल बहुत ही सिंपल है, देखो कितना भी ये सभी जो बना है ना, इसमें बस इतना याद रखो कार्बन अवेलेबल है। अब सी अवेलेबल है तो सी का कितना कंटेंट अवेलेबल है, कितना आइटम अवेलेबल है, तो सी का जो अवेलेबल था वो C2H5 एंड OH। अब देखो C2H5OH और साथ ही इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 अपने मन से लगा देते हैं। 2 का मतलब तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्लास 10 के फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर से जो हमारा सेकंड जो एनर्जी कंटेंट निकलता है और रिजल्टेंट निकलता है वो सेम होता है CO2 प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 ATP। भाई लोग मैंने पहले बता दिया कि 38 लिखने का मतलब क्या है, कि यही दर्शाना कि सोचो व्हाट इज हाउ मच देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 38। ये तो वही वाली बात होगी आसमान और जमीन वाली बात, कि एक 2 है एक 38 है, कितना 36 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर से एनर्जी कंटेंट कितना हो गया, लो हो गया। अब देखो यहाँ पर से कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैपेंस ओवर वेयर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा रिएक्शन कहाँ होता है। तो ऐसा रिएक्शन तो मैंने पहले बताया माइक्रोब्स में भी होता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में कब होता है इसका एक्सेप्शन मैं पहले बता देता हूँ। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बॉडी है उसमें क्या कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है और कब होता है। अब देखो भाई यहाँ पर से बस एक ही चीज याद रखो कि जब हमारे बॉडी में एरोबिक तो होता ही होता है, लेकिन एनारोबिक कब होता है कि व्हेनेवर वी नीड एनर्जी इन लार्जर अमाउंट इन क्विक टाइम, जब हमें तुरंत एनर्जी कर सकता हो। जैसे मान लो कि कोई एथलेटिक्स बहुत दूर तक रनिंग करता है, तो फाइनली जब उसका शरीर क्या होता है, उसका एनर्जी जितना जल्दी रेस्पिरेशन करता है फाइनली ऑक्सीडाइज होकर उसे एनर्जी वापस मिलते जाता है। और ऑक्सीजन तो मिलता ही है लेकिन उसे क्या चाहिए, उसे फटाफट एनर्जी चाहिए। तो फटाफट एनर्जी ना मिलने के कारण वहां पर प्रोसेस क्या होता है कि ये एथेनॉल क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, एथेनॉल जो प्रोसेस है, बस बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पर से, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, बल्कि वहां पर क्या हो जाता है कि 2 ATP तो मिलता है और ये एथेनॉल लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब देखो लैक्टिक एसिड जो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लैक्टिक एसिड क्या होता है, देखो जितना भी एसिड है मैं बार बार कर रहा हूँ, सभी में क्या है, ये सभी में कार्बन अवेलेबल है। तो बस आप इतना याद रखो लैक्टिक एसिड, और अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो बस मेरा कार्बन एंड कंपाउंड का फुल वीडियो देख लेना, वहां पर 5 पार्ट अवेलेबल करा दूंगा। एंड फाइनली 2 ATP जो सेम है। Hence from here we got the clue that what do you mean by aerobic and anaerobic respiration. So let's see the human respiration system in detail। तो भाई लोग हम लोग बहुत ही आसानी से जान रहे हैं कि देखो अब क्या होता है कि प्लांट्स में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट्स में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ही हमारा ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी होता है। लेकिन हमारे में एक्सेप्शन कभी दोनों हो जाता है, कभी कभी जब हमें ज्यादा एनर्जी कम समय में चाहिए होता है, या व्हेनेवर वी नीड मोर एनर्जी कंटेंट इन दिस टाइम। तो भाई लोग हम लोग क्या जानने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो अब रेस्पिरेशन इन प्लांट में कुछ रखा नहीं है, मैं सिंपली से क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट मीन्स व्हाट, दे डोंट नीड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज द रीजन वाई। तो यहाँ पर से बहुत बड़ा रीजन है कि उनको में इतना बड़ा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता है। तो हमारे में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में इतना सारा सिस्टम है
लेकिन इस बेचारे प्लांट्स में इतना क्यों नहीं है? देखो इसका रीजन क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं कि वहां पर से उनका जो मीट होता है ये सभी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण क्लियर हो जाता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण क्यों होता है? क्योंकि उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ चीजों का एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेन कंटेंट है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम बहुत मेन रोल निभा देते हैं। हमारे जो वास्कुलर टिश्यू है ये दोनों टिश्यू प्लांट्स में तो 100% रोल निभा देते हैं, और बचा हुआ प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन फुलफिल कर देता है। हिंस वहां पर से प्लांट्स में here from here one major question arises is that whenever anyone will ask you why plants do not need a type of respiratory system as human beings do, because most of the process of the respiration or excretion or transporting system is involved by simple diffusion and is either the vascular tissue fluid and xylem। तो यहाँ पर से भाई डिफ्यूजन क्या होता है? देखो डिफ्यूजन तो हम लोग बहुत पहले से ही जाने, नो नीड ऑफ डिस्कसिंग मोर। तो ऐसे देखो जैसे ये जो होता है ना रेस्पिरेशन, ये मान लो हमारा प्लांट है, ठीक है, ये सिंपली मैं दिखा रहा हूँ। अब प्लांट का बहुत बड़ा रूट हेयर होता है, रूट होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, ये तो भाई हमें क्या ले लिया यहाँ से ग्राउंड सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ सोल लेता है। अब भाई आप कहेगा कि ऑक्सीजन कैसे लेता है? तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन स्टोमाटा से लेता है। अब स्टोमाटा के बारे में तो आप लोग फुली क्लियर, नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन अबाउट स्टोमाटा। स्टोमाटा मींस व्हाट? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द रीब्स और इन द मिडवेन और इन द लीफ ऑफ प्लांट। अब भाई यहाँ पर से एक मेजर क्वेश्चन एराइज हुआ था कि क्या हमारा स्टोमाटा सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होता है? नहीं भाई लोग, नहीं भाई लोग, नहीं होता, बल्कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? हमारे लीफ में, ब्रांच में एंड स्टेम में, और कई बार तो रूट में भी होता है। तो एक मेजर यहाँ पर से क्या एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई लोग क्या हमारा रेस्पिरेशन रूट में भी होता है? तो बिल्कुल हाँ होता है। तो इतना से ये सिंपल प्रोसेस है, हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में भी, कोई बात नहीं। यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम लोग ज्यादा देर में से इसे डिस्कस ना करने वाले हैं, बल्कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मीन्स आवर बॉडी। तो हमारे ह्यूमन सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत ही बेचैन रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और यहाँ से हम लोग फिर से बोल रहे हैं भाई लोग, इतना मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है, और सभी के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं पर से हम लोग अगर लीव करें तो आपके साथ हमारा जो कंटेंट बचेगा वो क्या क्या बच जाएगा मैं पहले बताता हूँ। ये जो हमारा सामने फिगर दिख रहा है इसे तो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। देखिए एक्चुअली इसके बाद हमारे पास क्या बचा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम। दैट आफ्टर दिस ओनली 2 पार्ट्स आई विल अपलोड रिगार्डेड टू लाइफ प्रोसेस। एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन मेजर क्वेश्चन is that as we discussed only about the plants and animals, what about another animals like amoeba? अमीबा में भी भाई लोग कुछ नहीं, अमीबा में तो होता ही नहीं है। क्या होता है? देखो अब अमीबा में भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। अब डिफ्यूजन नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? जैसे देखो हम लोग अमीबा में क्या क्या पढ़ते हैं? सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, ये सभी पढ़ते हैं, पढ़े कि नहीं क्लास 9 में? इन क्लास 9 ओनली वी स्टडीड अबाउट दिस ऑल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन अमीबा। अमीबा एक्चुअली क्या करता है कि सिंपल डिफ्यूजन की तरह हम लोग जैसे पहले बताया मैंने, ये सेम प्रोसेस को अवेलेबल कर देता है। अब देखो सिंपल डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्यों? इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन all the particles or the energy content or the organ where the energy process take place or respiration take place need to be in direct contact with the our surrounding। तो भाई हमारे सराउंडिंग से ये तो सभी सटे हुए रहते हैं, बस इन्हें क्या रहता है यहाँ पर से एक सेल मेम्ब्रेन को तोड़ो फटाफट हमारे सराउंडिंग में। प्लांट के साथ क्या थे? प्लांट के पास ये हमारे टिश्यू थे, यहाँ से हमारे रूट थे यार, यहाँ पर से हमारे जो स्टोमाटा है, सभी जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हमारा ह्यूमन में क्या होता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से फाइनली ऑर्गेनिज्म। सो हाउ इज दिस पार्टिकुलर वीडियो? दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा।